नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में डॉक्टर नासिर हुसैन, सांसद और प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके बीच में है। वो अपनी बात रखेंगे संसद के बारे में। संसद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उस पर पूरी रोशनी डालेंगे डॉक्टर नासिर हुसैन। दोस्तों नमस्कार। जैसा आप तमाम लोगों को पता है और पिछले 2 हफ्ते से आप तमाम लोग देख भी रहे हैं और अपने टेलीविजन चैनल्स पे दिखा भी रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज खासकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों पे लगातार लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस पे नोटिस देते आई है, चर्चा की मांग करते आई है। चाहे वो महंगाई पे हो, चाहे वो खाने पीने के सामान पे जो जीएसटी लगाया गया है उस पे हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दाम पे हो, चाहे वो गिरता हुआ रुपया पे हो, चाहे वो अग्निपथ पे हो, चाहे वो ईडी आईटी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर हो, या चाहे जो चाइनीज सेना जो हिंदुस्तान में घुस बैठी है, इन तमाम मुद्दों पे अलग अलग टाइम हम लोगों ने नोटिस दिया और खासकर महंगाई के ऊपर लगातार हम लोगों ने चर्चा की मांग की। राज्यसभा में रूल 267 के तहत हम लोगों ने लगातार चर्चा की मांग की। कल लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पे चर्चा हुई है। आज राज्यसभा में 2 बजे से उन्होंने सरकार बहस के लिए टाइम निकाला है और लिस्ट किया, लेकिन हम रूल 267 के तहत हम लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था और हम लोगों को लग रहा भी है कि ये मूल मुद्दा है। हमारे देश के आम आदमी, हमारे देश की जनता को जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है लगातार, जिस तरह से हर दिन वो सवेरे जाते हैं दूध दही खरीदने के लिए, वो सवेरे जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और दूसरा सामान खरीदने के लिए, तो उनके पॉकेट पे मार लगता है। उनके पॉकेट पे जो है लगातार ये जो महंगाई जो महंगाई बढ़ रही है उसके वजह से जो हमारी जनता जो जूझ रही है, हमको लग रहा था कि दिन भर का कम से कम जो है इस चीज पे चर्चा होना चाहिए। हम इसीलिए 267 के अंदर हम लोगों ने मांग की थी ताकि सारा दिन भर का बिजनेस सस्पेंड करें और सुबह से लेकर शाम तक सारे एमपीज बैठ के इसके ऊपर चर्चा करें और सरकार उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन कल लोकसभा में सिर्फ 2-3 घंटे का डिस्कशन हुआ है। आज भी राज्यसभा में सिर्फ दोपहर के बाद का डिस्कशन इन्होंने रखा है, लेकिन क्योंकि महंगाई का मुद्दा है, क्योंकि 2 हफ्ते से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, हम चर्चा चाह रहे थे। अब चर्चा उन्होंने किसी भी फॉर्म में लिस्ट किया हो, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कल लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर का जिस तरह से जवाब आया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या तो पास्ट में जी रही है या नहीं तो फ्यूचर में जीती है, अब जुमलेबाजी करती है, वो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में कुछ भी उन्होंने कल कहा नहीं। उन्होंने ये इसका जवाब नहीं दिया कि जीएसटी जिस तरह से खाने पीने के पदार्थों पे लगाया गया वो कम होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया कि पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम होंगे या नहीं होंगे। उल्टा बीजेपी के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन या एमपीज जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, वो लगातार डिनायल मूड में थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि महंगाई है ही नहीं। वो लगातार ये कह रहे थे कि जो हम कोई बहुत ज्यादा महंगाई देश में नहीं है और हमारे यहाँ रिसेशन होगा नहीं, इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। कल की बहस से हम लोगों को ये लगा कि अपोजिशन के लोग अपनी बात रखा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आम जनता को रिलीफ नहीं मिली। इसके बावजूद आज हम चर्चा में जाएंगे, चर्चा का हिस्सा बनेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कोई राहत की बात कर ही नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे देश में हर चीज पे प्रधानमंत्री डिसीजन ले रहे हैं। हर चीज पे, हर डिसीजन में प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बिना, उनकी राय के बिना कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। वो सदन में आए और आके अपनी बात रखें और जवाब दें। हम चाहते हैं कि बहस के बाद जो है सरकार हमारे देशवासियों को इन तमाम चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ राहत दे। Friends, as you all know, that for the past 2 weeks, Congress party and other opposition parties have been giving notices to the government
and especially in Rajya Sabha under Rule 267 on various issues. It was price rise, inflation, Agnipath, EDIT, misuse of EDIT and CBI, on Chinese incursion, on the falling rupee, on all these issues. But the government's adamancy, government's arrogance, government's dictatorial attitude didn't allow any sort of discussion to take place in the last 2 weeks, and last 2 weeks of parliamentary business was washed out. We were continuously asking for a discussion. We said that we are ready to cooperate with the government, provided the government also includes the issues raised by the opposition, which are the issues of the people of this country. But unfortunately, government did not yield to it, and only yesterday they agreed for a discussion, for a short duration discussion in Lok Sabha. And despite the opposition MPs raising issues that concerns the people of their country, the finance minister and the government were in a denial mode. They said there is no inflation. They said there is no price rise. They said nothing much is happening here. They said there will be no recession. They said they either live in the past or they live in the future. They don't speak about the present condition. They either say that the Congress regimes or the Congress governments in the past are responsible for what is happening now, or they say that whatever is happening in the international level is the reason for what is happening in our country today. So we have been asking the government to have a discussion in Rajya Sabha under Rule 267 so that we can suspend all the business of the entire day and then have a long discussion on this issue, so that every member of parliament has sufficient time to air his or her views in the Rajya Sabha. But the government didn't agree for that. Nevertheless, the government said that they will have a discussion on price rise in the short duration, that is from the afternoon. We wanted a full day discussion, but since it's a discussion on price rise for which we have been asking for the past 2 weeks, we will participate in the discussion, but we would like the government to answer our basic questions. Whether there is price rise or not, whether there is inflation or not, whether they have levied GST on fruit products or not, whether the prices of petrol, diesel and gas are continuously raising or not. So these are the issues which need to be discussed, and then the government should come out with a plan to see that there is relief to the people of this country. And in today's discussion, because in yesterday's Lok Sabha discussion, nothing of that sort was there. There were no promises. There was no roadmap, and they were not ready to accept that there is inflation or price rise in our country. But I wish that the finance minister and the Congress party would like to see the Prime Minister being present in Rajya Sabha today, hearing to the opposition parties and the MPs, and then speaking on this issue, because ultimately it is the Prime Minister who takes decision on all these issues. We would be expecting the Prime Minister to be there in the Parliament, and also we will be expecting the Finance Minister and the government to give some relief to the Aam Aadmi of this country, to the common man of this country, to the poor of this country. Any questions you have? On this thing we can ask, please. See, the opposition parties have been raising important issues on which the government is on a back foot. The government is not in a position to control the economy. The government is not in a position to save the rupee. The government is not in a position to give jobs to the youth of this country. The government is not giving a good governance in this country. Everyone knows that. And we have raised so many issues on which they don't have any answers that you have seen in Lok Sabha yesterday. So that is the reason why they are trying to divert the attention of the common man in this country. They are trying to divert the political narrative of this country by carrying on such raids, by trying to blackmail, humiliate, and victimize the leaders of the opposition parties, whether it is Congress party or whether it is the leader from other opposition parties in our country. That is very, very clear now. There is a complete misuse of central agencies like ED, IT and CBI in our country. Thank you. Thank you so much.